connected Job 67:7-3 HUD. Kato Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantang Sadammang Sasangang Imehi Sakkari Yataraham Arapitehi Abhipujayama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parini Bhutobi Gacchima Janata Pamanasa Ime Sakkare Dugatapanakara Bhuti Pativanatu Amha क्या हुआ किसका है Amhakam Digarata Hitaya Sukhaya Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami देख उनका तो नहीं है ब्लू का या दीप्ति का क्या आवाज ना आ रही हो मेरे को तो मैं देखता हूँ इसकी कॉल है ये कौन है इसकी कॉल थी कोई
कुछ मत करो, बैक कर दो। Handvaim Vandasa Bhagavato Bhavagnam Karam Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Anandmayam Punnanusati Karomasi Tam Pupana Tam Evam Kalyana Kiti Saddo Abhugato Iti Piso Bhagava Arahat Samma Sambuddho Vijja Charana Sampanna Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhamma Sattha Deva Manussana Yaddo Bhagavati. Anandmayam Buddhamitim Karomasi Buddhamara Antavarata Diguna Biyuto Suddha Vijnana Karuna Isamagatato Bodhesiyo Sujanatam Kamalang Vasuro Vandamiham Tamarinam Sirsajinendam Buddhoyo Sabbapaninam Saranam Khemam Tamang Pathamanusatiṭṭhāna Vandami Tam Sirenaham Buddhasasmi Dasi Buddho Me Sami Kesaro Buddhasaham Niyademi Sariran Jivitan Chidang Vandantoham Charissa Buddhasaiva Subodhitang Nati Me Saranang Anyang Saranang Varang Etena Satchavajjena Vadheyam Sattu Sasane Buddhang Me Vandamanena Yam Punyam Pasutam Hida Sabbepi Antarayami Mahe Sumtassa Tejasa Vajya Vajitsava Deko Kammam Pakadamaya Buddho Patiganhatu Ajayantam Kalantare Samvaritam Bhavate. Anandmayam Dhammanusati Karomasi Svakato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko Ehipassiko Panaiko Pacchattam Veditambo Vinyohiti. Anandmayam Dhammavihitim Karomasi Svakhatadi Guna Yoga Vasena Seyo Duvagga Paka Pariya Tivimokha Vedo Dhammo Kuloka Adadhani Dhani Vandamiham Damaran Saradhammametam Dhammo Yo Sabbapaninam Saranam Khemamuttamam Dutiyanusatiṭṭhāna
Vandami tam sirenam Dhammasasmi daso Dhammo me sami kissaro Dhammasaham niyademi Sariran jivitan chidam Vandantoham charissam Dhammaseva sudhammatam Nati me saranang anyang Dhammo me saranang varang Etena satcha vajjena Vaddeyam sattu sasanai Dhammang me vandamayena Yam punyam pasutam eda Sabbepi antarayam Mahesum tasya tejasa Kaina vachya vajitsava Dhamme kukam paktam Dhammo patiganatva chanta Kalantare samvarita Dhammayam Sanghānusatinayam Karumasi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Atta Purisa Puggala Esu Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Antaram Punyaketang Lokasati Dhammayam Sanghādigitim Karumasi Dhammajo supatipatti gunādiyuto Yomattabido ariya puggala sangsetu Sīlādi dhamma pavarāsa kāya citto Vandāmi haptamariyāna gana susuttam Sanghoyo Sapapaninam Saranam khemamuttamam Tatyanusatittanam Vandami tam sirenaham Sanghasasmi dasova Sangho me sami kissaro Sanghasaham niyademi Sariran jivitan chidam Vandantoham charissami Sanghasu patipannatam Atti me saranang anyang Saranang varang Etena satcha vajjena Vaddeyam sattu sasane Tangham me vandamanena Yam punyam pasutam eda Sabbepi antarayam Mahesum tasya tejasa Kaino vachya vajitsava Sanghe kukamam pakatame Sangho patiganatva chantam Kalantare samvaritam sanghe अब हम चैंटिंग करेंगे 5 डेली रिफ्लेक्शन से आगे 32 अंगों का विश्लेषण और अनित्यता के बारे में पेज 41 to 46 ऑफ हिंदी चैंटिंग बुक
चलो बार बार अनुस्मरणीय 5 विषय। अन्नमयम अभिन्नः पंचलेखन पाठम बनामसि। मुझे हिंदी से दोनों दोनों करो ना, पाली पाली भी हिंदी भी दोनों है। आई हम बार बार विवेचन योग्य पाठ करें। जरा धम्मो में जरा अनतीतो, मैं जरा धर्मा हूँ, मैंने जरा को पराजित नहीं किया है। व्याधि धम्मो में व्याधिम अनतीतो, मैं व्याधि धर्मा हूँ, मैंने व्याधि को पराजित नहीं किया है। मरण धम्मो में मरणम अनतीतो, मैं मरण धर्मा हूँ, मैंने मृत्यु को पराजित नहीं किया है। सबे में पिए ही नाना पे ही नाना भावो बिना भावो, सभी मेरे प्रिय, मुझे प्रसन्नता देने वाले मुझसे दूर हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। कम्मस्य कामी कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं पापकं वा तस्य दायादां भविष्यामि। मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, कर्मों का उत्तराधिकारी हूँ। कर्म ही मेरी योनि है, कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म ही मेरी शरण है। मैं जो भी कर्म करूँगा, कल्याणकारी या पापकारी, उसका उत्तराधिकारी बनूंगा। एवं अम्येहि अभिन्नः पंचलेखितव्यम्। इस प्रकार हमें बार बार विवेचन करना चाहिए। अन्नमयम द्वात्रिंशाकार पाठम भणामसि। आए हम शरीर के 32 अंगों का पाठ करें। कायम भूमि कायो ऊर्ध्वं पादतला अधो केशमध्यका तच्च पर्यन्तं पूरो नाना अपारस्य। यह मेरी काया तलवों से ऊपर एवं सिर से नीचे त्वचा से लिपटी हुई पूर्ण रूप से नाना प्रकार की असुंदर वस्तुओं से भरी हुई है। अत्यमस्मिन् काये इस काया में केशा सिर के बाद रोमा शरीर के बाद नखा नाखून दंता दांत त्वचा त्वचा मांसा मांस न्यारु नसें हड्डी हड्डियाँ हड्डिमज्जं मज्जा यक्कम गुर्दे हृदयम दिल यकनम जिगर किलोमकम झिल्लियाँ विहकम तिल्ली अभ्यासम फेफड़े अंतम आंते अंत गुणम अंतड़ियाँ उदरियम पेट में पड़ा भोजन करीसम मल पित्तम पित्त सीमहम कफ भुगो बस लोहितम रक्त सेदो पसीना मेदो चर्बी अस्सु आंसू वसा वसा खेलो धूल सिंघाणिका श्लेम लसिका जोड़ों का तेल उत्तम मूत्र मध्य लुंगन्नति मस्तिष्क एवं अयम मे कायो ऊर्ध्वं पादतला अधो केश मध्यका तच्च पर्यन्तो पूरो नानाप्रकारस्य असुचिनो। यह है मेरी काया तलवों से ऊपर एवं सिर से नीचे त्वचा से लिपटी हुई पूर्ण रूप से नाना प्रकार की असुंदर वस्तुओं से भरी हुई। अनित्यता का विवेचन। अन्नमयम अनिच्छानुसति पाठम भणामसि। आए हम अनित्य अनुस्मरण का पाठ करें।
सभी संखारा अनिच्चा, सभी संस्कृत चीजें अनित्य हैं। सबे संखारा दुखा, सभी बनी हुई चीजें दुख हैं। सबे संखा अनत्ता, सभी धर्म अनात्म है। आद ध्रुवम जीवितम, जीवन अनिश्चित है। ध्रुवम मरणम, मृत्यु अटल है। अवश्यम मया मरितव्यम, मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। मरण पर्युसानम मे जीवितम, मेरे जीवन का अंत मृत्यु ही है। जीवितम में अनियतम, मेरा जीवन अनिश्चित है। मरणम में नियतम, मेरी मृत्यु निश्चित है। बत अवश्य अयम कायु, यह शरीर अचिरम शीघ्र ही अपेद विज्ञानो चेतना विहीन हो जाएगा, छुट्टो फेंक दिया जाएगा। अधिशेषति पृथ्वी, पृथ्वी पर पड़ा होगा। कलिंगरम एवं सड़े हुए लकड़ी के लट्ठे की भांति। निरर्थम, बेकार। अनिच्छावत संखार, सभी बनी हुई चीजें वास्तव में अनित्य हैं। उपादय धम्मिनो, उत्पन्न होना तथा व्यय होना इनका स्वभाव है। चित्वा निरुद्धन्ते, उत्पन्न होकर वे निरुद्ध हो जाती है। तेषां सुख समो सुखो, इनका उपशमन सुखकारी है। साधु साधु साधु। Today again we have two small discourses of Ajahn Chah which we will listen. First is called the Gift of Dhamma and second is called Living with a Cobra. Called A Gift of Dhamma, and this was first published in the book Bodhinyana. This was the first collection of Ajahn Chah's teachings put into a substantial book form, and this was a discourse delivered to the Assembly of Western Monks and Novices and Lay Disciples at Bungwai Forest Monastery, Wat Punnanusati, in Ubon on the 10th of October 1977. This discourse was offered to the parents of one of the monks on the occasion of their visit from France. So this is Ajahn Tignano, who is one of the more senior monks. So he was one of the early foreign disciples of Venerable Ajahn Chah, and so his family were visiting at this time. So this is a fairly short talk, and also, so as we did yesterday, there's another short one that follows it that I'll aim to read as well this evening. A Gift of Dhamma. I am happy that you've taken this opportunity to come and visit Wat Pah Pong and to see your son, who is a monk here. However, I'm sorry I have no gift to offer you. France already has so many material things, but of Dhamma there's very little. Having been there and seen for myself, there isn't really any Dhamma there which could lead to peace and tranquility. There are only things which continually make one's mind confused and troubled. France is already materially prosperous. It has so many things to offer which are sensually enticing. Sights, sounds, smells, tastes and textures. However, people ignorant of Dhamma only become confused by them. So, today I will offer you some Dhamma to take back to France as a gift from Wat Pah Pong and Wat Punnanusati. What is Dhamma?
Dhamma is that which can cut through the problems and difficulties of mankind, gradually reducing them to nothing. That's what is called Dhamma. And that's what should be studied throughout our daily lives, so that when some mental impression arises in us, we'll be able to deal with it and go beyond it. Problems are common to us all, whether living here in Thailand or in other countries. If we don't know how to solve them, we'll always be subject to suffering and distress. That which solves problems is wisdom, and to have wisdom, we must develop and train the mind. The subject of practice isn't far away at all. It's right here in our body and mind. Westerners and Thais are the same. They both have a body and a mind. A confused body and mind means a confused person, and a peaceful body and mind, a peaceful person. Actually, the mind, like rainwater, is pure in its natural state. If we were to drop green colouring into clear rainwater, however, it would turn green. If we were to drop yellow colouring, it would turn yellow. The mind reacts similarly. When a comfortable mental impression drops into the mind is comfortable. When the mental impression is uncomfortable, the mind is uncomfortable. The mind becomes cloudy, just like the coloured water. When clear water contacts yellow, it turns yellow. When it contacts green, it turns green. It will change colour every time. Actually, that water, which is green or yellow, is naturally clean and clear. This is also the natural state of the mind, clean and pure and unconfused. It becomes confused only because it pursues mental impressions. Let me explain more clearly. Right now, we're sitting in a peaceful forest. Here, if there's no wind, a leaf remains still. When a wind blows, it flaps and flutters. The mind is similar to that leaf. When it contacts a mental impression, it too flaps and flutters according to the nature of that mental impression. And the less we know of Dhamma, the more the mind will continually pursue mental impressions. Feeling happy, it succumbs to happiness. Feeling suffering, it succumbs to suffering. There's constant confusion. In the end, people become neurotic. Why? Because they don't know. They just follow their moods and don't know how to look after their own minds. When the mind has no one to look after it, it's like a child without a mother or a father to take care of it. An orphan who has no refuge, and without a refuge, he's very insecure. Likewise, if the mind is not looked after, if there's no training or maturation of character with right understanding, it's really troublesome. The method of training the mind which I will give you today is kammatthana, a chosen meditation or object. Kamma means action, and thana means base. In Buddhism, it is the method of making the mind peaceful and tranquil. It's for you to use in training the mind, and with the trained mind, investigate the body. Our being is composed of two parts. One is the body, the other the mind. There are only these two parts. What is called the body is that which can be seen with our physical eyes. The mind, on the other hand, has no physical aspect. The mind can only be seen with the internal eye, or the eye of the mind. These two things, body and mind, are in a constant state of turmoil. What is the mind? The mind isn't really any thing. Conventionally speaking, it's that which feels or senses. That which senses, receives, and experiences all mental impressions is called mind. Right at this moment, there is mind. As I'm speaking to you, the mind acknowledges what I'm saying. Sounds enter through the ear, and you know what's being said. That which experiences this is called mind. This mind doesn't have any self or substance. It doesn't have any form. It just experiences mental activities. That's all. If we teach this mind to have right views, this mind won't have any problems. It will be at ease. The mind is mind. Mental objects are mental objects. Mental objects are not the mind. The mind is not mental objects. In order to clearly understand our minds and the mental objects in our minds, we say that the mind is that which receives the mental objects which pop into it. When these two things, mind and its objects, come into contact with each other, they give rise to feelings.
Some are good, some bad, some cold, some hot, all kinds. Without wisdom to deal with these feelings, however, the mind will be troubled. Meditation is the way of developing the mind so that it may be a base for the arising of wisdom. Here the breath is a physical foundation. We call it Anapanasati, or mindfulness of breathing. Here we make breathing our mental object. We take this object of meditation because it's the simplest and because it has been the heart of meditation since ancient times. When a good occasion arises to do sitting meditation, sit cross-legged. Right leg on top of the left leg, right hand on top of the left hand. Keep your back straight and erect. Say to yourself, now I will let go of all my burdens and concerns. You don't want anything that will cause you to worry. Let go of all concerns for the time being. Now fix your attention on the breath. Then breathe in and breathe out. In developing awareness of breathing, don't intentionally make the breath long or short. Neither make it weak or strong. Just let it flow normally and naturally. Mindfulness and self-awareness arising from the mind will know the in-breath and the out-breath. Be at ease. Don't think about anything. No need to think of this or that. The only thing you have to do is fix your attention on the breathing in and breathing out. You have nothing else to do but that. Keep your mindfulness fixed on the in-breath and the out-breath as they occur. Be aware of the beginning, middle, and end of each breath. On inhalation, the beginning of the breath is at the nose tip, the middle at the heart, and the end in the abdomen. On exhalation, it's just the reverse. The beginning of the breath is in the abdomen, the middle at the heart, and the end at the nose tip. Develop the awareness of the breath, 1 at the nose tip, 2 at the heart, 3 in the abdomen. Then in reverse, 1 in the abdomen, 2 at the heart, 3 at the nose tip. Focusing the attention on these 3 points will relieve all worries. Just don't think of anything else. Keep your attention on the breath. Perhaps other thoughts will enter the mind, and it'll take up other themes and distract you. Don't be concerned. Just take up the breathing again as your object of attention. The mind might get caught in judging and investigating your moods, but continue to practice, being constantly aware of the beginning, middle, and end of each breath. Eventually, the mind will be aware of the breath at these 3 points all the time. When you do this practice for some time, the mind and body will get accustomed to the work. Fatigue will disappear. The body will feel lighter, and the breath will become more and more refined. Mindfulness and self-awareness will protect the mind and watch over it. We practice like this until the mind is peaceful and calm, until it is one. One means that the mind will be completely absorbed in the breathing, but it doesn't separate from the breath. The mind will be unconfused and at ease. It will know the beginning, middle, and end of the breath and remain steadily fixed on it. Then when the mind is peaceful, we fix our attention on the in-breath and the out-breath at the nose tip only. We don't have to follow it up and down to the abdomen and back. Just concentrate on the tip of the nose where the breath comes in and goes out. This is called calming the mind, making it relaxed and peaceful. When tranquility arises, the mind stops. It stops with its single object, the breath. This is what's known as making the mind peaceful so that wisdom may arise. This is the beginning, the foundation of our practice. You should try to practice this every single day, wherever you may be, whether at home, in the car, lying or sitting down. You should be mindfully aware, watching over the mind constantly. This is called mental training and should be practiced in all the 4 postures, not just sitting, but standing, walking, and lying as well. The point is that we should know what the state of the mind is in each moment. And to be able to do this, we must be constantly mindful and aware. Is the mind happy or suffering? Is it confused? Is it peaceful? Getting to know the mind in this manner allows it to become tranquil, and when it does become tranquil, wisdom will arise. With the tranquil mind, investigate the meditation subject, the body, from the top of the head to the soles of the feet, then back to the head. Do this over and over again. Look at and see the hair of the head, hair of the body, the nails, teeth, and skin. In this meditation we will see
that this whole body is composed of 4 elements: earth, water, fire and wind. The hard and solid parts of our body make up the earth element, the liquid and flowing parts the water element. Winds that pass up and down the body make up the wind element, and the heat in our body the fire element. Taken together they compose what we call a human being. However, when the body is broken down into its component parts, only these 4 elements remain. The Buddha taught that there is no being per se, no human, no Thai, no Westerner, no person, but that ultimately there are only these 4 elements. That's all. We assume that there's a person or a being, but in reality there isn't anything of the sort. Whether taken separately as earth, water, fire and wind, or taken together, labeling what they form a human being, they are all impermanent, subject to suffering, and not self. They're all unstable, uncertain, and in a constant state of change, not stable for a single moment. Our body is unstable, altering and changing constantly. Hair changes, nails change, teeth change, skin changes, everything changes, completely. Our mind too is always changing. It isn't a self or substance. It isn't really us, not really them, although it may think so. Maybe it'll think about killing itself. Maybe it'll think of happiness or suffering, all sorts of things. It's unstable. If we don't have wisdom and we believe this mind of ours, it will lie to us continually. And alternately, we suffer and are happy. This mind is an uncertain thing. This body is uncertain. Together, they are impermanent. Together, they are a source of suffering. Together, they are devoid of self. These, the Buddha pointed out, are neither a being, nor a person, nor a self, nor a soul, nor us, nor them. They are merely elements: earth, water, fire and wind. Elements only. When the mind sees this, it will rid itself of attachment, which holds that I am beautiful, I am good, I am evil, I am suffering, I have, I this or I that. You will experience a state of unity, for you will have seen that all of mankind is basically the same. There is no I. There are only elements. When you contemplate and see impermanence, suffering and not self, there will no longer be clinging to a self, a being, I, or he or she. The mind which sees this will give rise to nibbida, disenchantment and dispassion. It will see all things as only impermanent, suffering and not self. Then the mind stops. The mind is Dhamma. Greed, hatred and delusion will then diminish and recede little by little until finally there is only mind, just the pure mind. This is called practicing meditation. Thus, I ask you to receive this gift of Dhamma which I offer you to study and contemplate in your daily lives. Please accept this Dhamma teaching from Wat Pah Pong and Wat Pah Chah as an inheritance handed down to you. All of the monks here, including your son and all the teachers, make you an offering of this Dhamma to take back to France with you. It will show you the way to peace of mind. It will render your mind calm and unconfused. Your body may be in turmoil, but your mind will not. Those in the world may be confused, but you will not. Even though there is confusion in your country, you will not be confused, because the mind will have seen. The mind is Dhamma. This is the right path, the proper way. You may remember this teaching in the future. May you be well and happy. May you remember this teaching in the future. May you be well and happy. This is the 21st talk in the collection, and this is called Living with the Cobra. And this is a little talk that Ajahn Chah gave to a woman called Marjorie Still, an Englishwoman, an elderly Englishwoman, and it was a final instruction being given to her, and she spent a couple of months at Wat Punnanusati in 1978, beginning of 1979, and I was there for this one. Living with the Cobra.
This short talk is for the benefit of a new disciple who will soon be returning to London. May it serve to help you understand the teaching that you studied here at Wat Pah Pong. Most simply, this is the practice to be free of suffering in the cycle of birth and death. In order to do this practice, remember to regard all the various activities of mind, all those you like and all those you dislike, in the same way as you would regard a cobra. The cobra is an extremely poisonous snake, poisonous enough to cause death if it should bite us. And so it is with our moods also. The moods that we like are poisonous. The moods that we dislike are also poisonous. They prevent our minds from being free, and they hinder our understanding of the truth as it was taught by the Buddha. Thus it's necessary to try to maintain our mindfulness throughout the day and night. Whatever you may be doing, be it standing, sitting, lying down, speaking, or whatever, you should do with mindfulness. When you're able to establish this mindfulness, you'll find that there will arise clear comprehension associated with it, and these two conditions will bring about wisdom. Thus mindfulness, clear comprehension, and wisdom will work together, and you'll be like one who is awake both day and night. These teachings left to us by the Buddha are not teachings to be just listened to or simply absorbed on an intellectual level. They are teachings that through practice can be made to arise and be known in our hearts. Wherever we go, whatever we do, we should have these teachings. And what we mean by to have these teachings, or to have the truth, is that whatever we do or say with wisdom. When we think and contemplate, we do so with wisdom. We say that one who has mindfulness and clear comprehension combined in this way with wisdom is one who is close to the Buddha. When you leave here, you should practice bringing everything back to your own mind. Look at your mind with this mindfulness and clear comprehension and develop this wisdom. With these three conditions, there will arise a letting go. You'll know the constant arising and passing away of all phenomena. You should know that that which is arising and passing away is only the activity of mind. When something arises, it passes away, and is followed by further arising and passing away. In the way of Dhamma, we call this arising and passing away birth and death. And this is everything. This is all there is. When suffering has arisen, it passes away, and when it has passed away, suffering arises again. There's just suffering arising and passing away. When you see this much, you'll be able to know constantly this arising and passing away. When your knowing is constant, you'll see that this is really all there is. Everything is just birth and death. It's not as if there's anything that carries on. There's just this arising and passing away as it is. That's all. This kind of seeing will give rise to a tranquil feeling of dispassion towards the world. Such a feeling arises when we see that actually there is nothing worth wanting. There's only arising and passing away, a being born followed by a dying. This is when the mind arrives at letting go, letting everything go according to its own nature. Things arise and pass away in our mind, and we know. When happiness arises, we know. When dissatisfaction arises, we know. And this knowing happiness means that we don't identify with it as being ours. Likewise, with dissatisfaction and unhappiness, we don't identify with them as being ours. When we no longer identify with and cling to happiness and suffering, we're simply left with the natural way of things. So we say that mental activity is like the deadly poisonous cobra. If we don't interfere with a cobra, it simply goes its own way. Even though it may be extremely poisonous, we're not affected by it. We don't go near it or take hold of it, and it doesn't bite us. The cobra does what is natural for a cobra to do. That's the way it is. If you're clever, you'll leave it alone. Let be that which is not good. Let it be according to its own nature. Also let be that which is good. Let your liking and your disliking be, the same way that you don't interfere with a cobra.
So, one who is intelligent will have this kind of attitude towards the various moods that arise in the mind. When goodness arises, we let it be good, but we know also. We understand its nature. So too, we let be the not good. We let it be according to its nature. We don't take hold of it because we don't want anything. We don't want evil, neither do we want good. We want neither heaviness nor lightness, happiness nor suffering. When, in this way, our wanting is at an end, peace is firmly established. When we have this kind of peace established in our minds, we can depend on it. This peace, we say, has arisen out of confusion. Confusion has ended. The Buddha called the attainment of final enlightenment an extinguishing. In the same way that a fire is extinguished, we extinguish fire at the place at which it appears. Wherever it's hot, that's where we can make it cool. And so it is with enlightenment. Nibbana is found in samsara. Enlightenment and delusion exist in the same place, just as do hot and cold. It's hot where it was cold, and cold where it was hot. When heat arises, the coolness disappears, and when there's coolness, there's no more heat. In this way, Nibbana and samsara are the same. We're told to put an end to samsara, which means to stop the ever-turning cycle of confusion. This putting an end to confusion is extinguishing the fire. When external fire is extinguished, there is coolness. When the internal fires of sensual craving, aversion and delusion are put out, this is coolness also. This is the nature of enlightenment. It's the extinguishing of fire, the cooling of that which was hot. This is peace. This is the end of samsara, the cycle of birth and death. When you arrive at enlightenment, this is how it is. It's an ending of the ever-turning and ever-changing, an ending of greed, aversion and delusion in our minds. We talk about it in terms of happiness because this is how worldly people understand the ideal to be. But in reality, it has gone beyond. It is beyond both happiness and suffering. It's perfect peace. So, as you go, you should take this teaching which I've given you and contemplate it carefully. Your stay here hasn't been easy, and I've had little opportunity to give you instruction, but in this time you've been able to study the real meaning of our practice. May this practice lead you to happiness. May it help you to grow in truth. May you be freed from the suffering of birth and death. आज के प्रवचनों का हिंदी अनुवाद करते हैं। पहला था गिफ्ट ऑफ धम्मा, जो अजान चाह ने, जो एक भिक्षु वहाँ रहते थे वाटपा नानाचात में, उसके फ्रांस के उनके पिताजी माता पिता आए थे, तो जब वो जा रहे थे तो उनको दिया था। भूमिका इसलिए आवश्यक है कि शुरुआत प्रवचन की उसी से होती है कि हम लोग आपको कुछ और गिफ्ट नहीं दे सकते, यही गिफ्ट दे रहे हैं जो आप फ्रांस में ले जाइए। मैं जब गया था वहाँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है।
तो ये धम्म है वो ऐसी चीज़ है जो कि सारी परेशानियों को जीवन की समाप्त कर सकता है। तो शुरू किया कि फ्रांस के लोग हों चाहे थाई के लोग हों, सब एक जैसे ही हैं और सबके लिए दुख महसूस करते हैं मन की परिस्थितियों के कारण, और अगर प्रज्ञा होती है तो सॉल्व कर पाते हैं। कंफ्यूज्ड आदमी हो, शरीर कंफ्यूज्ड, मन कंफ्यूज्ड, तो दुख होगा, चाहे वो थाई हो चाहे वेस्ट फ्रांस का हो। पीसफुल होगा तो शरीर और मन पीसफुल होगा तो पीस महसूस करेगा। मन जो है वो शुद्ध पानी की तरह है, जैसे बारिश का पानी साफ होता है, लेकिन अगर उसमें लाल रंग के हरा रंग या पीला रंग डाल दें तो वो बदल जाता है उसका एबिलिटीज़। इसी तरह मन भी हमारा बेसिकली नैसर्गिक तौर पे शुद्ध है, लेकिन उसमें जो विकार आ जाते हैं उससे वो क्लाउडी हो जाता है, स्पष्ट से देख नहीं पाता, जैसे कि रंगीन पानी से हम ठीक से देख नहीं पाते। एक और उदाहरण ने दिया कि जैसे एक पेड़ है, यहाँ पे जंगल में पेड़ का पत्ता है वो खड़ा है, हवा चलती है तो फ्लटर करता है, इधर उधर चलता है। इसी तरह से हमारा चित्त जो है वो शांत रहता है, लेकिन जब मेंटल इंप्रेशन आते हैं तो इधर से उधर भटकने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि मन को संभाल के रखा जाए, उसको क्या ध्यान रखा जाए। अगर कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके माता पिता उसका ख्याल नहीं रख रहे, तो मन फिर भटकता ही रहता है। तो इसलिए मन को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और उसके लिए उन्होंने कम्मठ ठान दिया जाता है, कोई आलम्बन दिया जाता है जिसके आधार पे मन को ट्रेन किया जाए। तो शरीर जो है वो तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं शरीर की, लेकिन मन को जो है मन की आँखों से देखना होता है, क्योंकि वो रूप है, वो कोई चीज़ नहीं है। तो मन किसे कहते हैं? जो कि सारे बाहर के संसार के जो इम्प्रेशंस आते हैं उनको महसूस करता है, और फिर उनको मन जो है उनको प्रोसेस करके उसको एक रूप देता है मन के अंदर कि ये क्या है, पहचानता है। तो हमारी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके आधार पे होनी चाहिए कि मन जो है वो चीज़ है जो कि बाहर की इम्प्रेशन रिसीव करता है, और उससे मेंटल मन में जो भी उछल पुछल होती है, मेंटल उसको ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मन एक चीज़ है जानने वाला, और मेंटल ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनको वो जाना जा रहा है, और इनके समन्वय से फीलिंग्स जागती हैं, वेदना जागती है। और प्रज्ञा की इसलिए ज़रूरत है कि हम वेदना को ठीक से हैंडल कर पाएँ। तो उन्होंने आनापान की बात की कि आप आनापान किस तरह बैठ के ध्यान कर सकते हैं। उसको लिए उन्होंने कहा कि ध्यान करने से पहले सारे जो परेशानियां हैं, अपनी दिक्कतें हैं, उनको भूल जाएं कुछ समय के लिए, ध्यान के समय के लिए, ताकि सारा ध्यान सजग रहें कि सांस आ रहा है जा रहा है। फिर पूरी इंस्ट्रक्शन जैसे दी जाती है ना कि आप लंबा है तो उसको जानेंगे लंबा है, लंबा छोटा करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी कि आप 3 जगह पे सांस को जान सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि आप नासिका के टिप पे जान सकते हैं जहाँ से सांस अंदर आ रहा है, फिर बीच में उसको हृदय पे जान सकते हैं, और अंत में जब वो बेली में जाता है। तो इस तरह 3 जगह पे उन्होंने कहा कि आप सांस को जानेंगे अगर लगातार तो जल्दी ही मन शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाए मन तो फिर एक ही जगह पे उसको रख सकते हैं, नासिका के द्वार पे या नासिका के टिप पे, तो समाधि पुष्ट हो सकती है। और अगर बीच में मचा रहा है, मन भटक जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए और अपने आप वापस अपनी स्थिति पे आ जाए। तो अंततः जो मन जो है सारी जगह पे सांस को साइमल्टेनियसली जानते लगता है, और मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकते हैं। और ये काम जो है हर समय कर सकते हैं, दिन भर में कभी भी किया जा सकता है, हर पोस्चर में, बैठे उठे, चलते, लेटे हुए। और इन्वेस्टिगेट क्या करना है, शरीर कैसा है, जैसे उसके 32 अंगों का विश्लेषण करें कि क्या है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, बाहर से क्या दिख रहे हैं, या शरीर का 4 धातुओं के रूप में, अग्नि जल पृथ्वी वायु के रूप में, कि जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं, वास्तव में वो कोई है नहीं वहाँ पे, सिर्फ अग्नि जल पृथ्वी वायु का समन्वय है, और सारा संसार इसी तरह का है। तो इसलिए हम आपस में भेद नहीं है, मेरे शरीर में, आपके शरीर में, किसी के शरीर में कोई भेद नहीं है। और ये फिर धीरे धीरे समझते हैं कि सब अनित्य हैं, बदलते रहते हैं, मैं हमारे पर्सनल नहीं है, और
क्योंकि निरंतरता जब बदलते हैं तो कभी सुख का कारण, अबाइडिंग सुख का, निरंतर सुख का कारण नहीं हो सकते, दुख उसमें आएगा ही। अब अगर हमारे में प्रज्ञा ना हो, ये बात समझ ना हो, तो मन हमको छलता रहता है और हम सुख के पीछे भागते रहते हैं। अगर हमारे को ठीक से प्रज्ञा जाग जाए, हम समझ जाएं कि मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ धर्म है जो आपस में खेल रहे हैं, तो परेशानी नहीं होती। राग द्वेष और मोह कम होने लगते हैं और अंततः जब हम अनित्य बोध, दुख बोध काफ़ी गहराई से होता है तो निबिद्धा जाती है, डिस्पैशन जागता है, जो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। तो अंत में उन्होंने कहा कि ये जो मैंने गिफ्ट दिया धर्म का, वो शांति से सुन के समझ के इसको अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे मन को शांत रखेगा। कहीं चारों तरफ कन्फ्यूजन भी होगा तो तब भी तुम शांत रहोगे। फिर दूसरी टॉक भी इसी तरह से एक इंग्लिश वुमेन को दी गई थी, जो नानाचात में कुछ समय के लिए रही होंगी और फिर वापस जा रही थी। तो जहाँ नम्रों ने बताया कि ये टॉक मेरे सामने ही दी गई थी, तो उस लेडी को कह रहे हैं कि हमारी जो साधना है उसका उद्देश्य ये है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बार बार से मुक्त हो जाएं, और वो तभी संभव है जब हम अपनी पसंद नापसंद, सुख दुख, प्रशंसा, अपयश सबको एक जैसा माने। जितना भी मूड है हमारे, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, उनसे हम विचलित ना हो। मूड आता है, कुछ कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, उदासी आती है, प्रसन्नता आती है, उनको आने जाने वाला आगंतुक समझ के उनके अंदर उलझेंगे नहीं। तो जब इस तरह से हम ध्यान रखते हैं निरंतरता से, तो सती के साथ संपजन्य भी जागता है, हमारी विजडम जागती है, क्लियर कॉम्प्रहेंशन जागता है, और फिर हम टीचिंग को ठीक से प्रैक्टिस कर पाते हैं। फिर अपने अंतर से आत्मसात करके अंतर मन में जान सकते हैं। तो फिर हम जो भी कुछ करते हैं प्रज्ञा के साथ करते हैं, और जो प्रज्ञा के साथ रहता है वो भगवान बुद्ध के साथ रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो प्रतिक्षण जब भी मौका लगे तो अपने मन को देखो, सती संपजन्य के हिसाब से क्या हो रहा है, क्या उसमें उठ रहा है, क्या उसमें जा रहा है, और समझो कि जितने भी कंडीशन फिनोमेना हैं वो उदय होंगे तो व्यय होगा ही। तो इसलिए उसमें कोई सार ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब इस तरह से साधना करते हैं तो सचमुच में वैराग्य जागता है, जो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और फिर हम किसी चीज़ से चिपकते नहीं हैं, सबके प्रति जो हमारी आसक्ति है रेजिडुअल समाप्त हो जाती है, और किसी भी चीज़ के साथ हम आइडेंटिफाई नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जो ये मेंटल कंटेंट्स हैं हमारे, सुख दुख, अच्छे बुरे, अच्छाई बुराई, ये सब एक कोबरा की भांति हैं, जिनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कोबरा को डिस्टर्ब करेंगे तो काटेगा, उसी तरह से मेंटल एक्टिविटी हो रही है उसको देखते रहो और जाने दो। जैसे कोबरा बैठा उसको देखते रहो, जाने दो, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमारा एटीट्यूड इसी सिमडी को समझते हुए मन के अंदर जो संखार उठते हैं उनके प्रति होना चाहिए। चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी में नहीं उलझेंगे। और जब हम किसी में नहीं उलझते हैं तो सचमुच में गहन शांति का अनुभव होता है, और फिर वही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान ने मुक्ति के लिए एक्सटिंग्विशिंग शब्द, निब्बान शब्द का मतलब ये भी होता है जो कूल ऑफ हो जाए, ठंडा हो जाए। तो हमको समझना है कि निब्बान जो है वो संसार के अंदर जहाँ आग लगी है वहीं पे आग को बुझाया जा सकता है। तो संसार के अंदर ही निब्बान का अनुभव भी होता है। और जब निब्बान का अनुभव होता है तो एक तरह से जो संसारण का खेल है वो समाप्त हो जाता है, हमारे कन्फ्यूजन समाप्त हो जाते हैं, या यूँ कहें कि राग अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि बुझ जाती है। तो हम अंततः सुख और दुख से परे पहुंच जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये टीचिंग साथ लेके जाओ और ये तुम्हारी मदद करे धर्म, ऐसी शुभकामनाएं दी। अभी टाइम है तो थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं शांति से।
लेट्स नाउ प्रैक्टिस धम्मानुसति का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। कई बार हम कर चुके हैं तो समझते हैं कैसे करना चाहिए। धर्म के गुणों को याद करके उसके प्रति श्रद्धा, मार्ग पे चलने का उत्साह और धर्म को पालन करने वालों की धर्म रक्षा करता है, ये बात बहुत सपोर्ट करती है। जो एडवर्सिटी में, दुख में, दिक्कत में, मृत्यु के समय पे मैं एक एक शब्द बोलता हूँ और धम्मानुसति का, और अपने मन में हम उसके अनुरूप चिंतन करते हैं अपने आप। साक्षातो भगवता धम्मो, साक्षात। तो अपने मन में हम चिंतन कर सकते हैं धर्म की कितनी व्याख्याएं हमने सुनी हैं और कितनी उनमें से स्वाख्यात है। फिर उसके गुण बताए। संदिट्ठि को, अकाली को, संदृष्टिक, अपरेंट एयर नौवी, इसी से, और इसीलिए कहा अकाली को। समय नहीं लगता धर्म को अनुभव में और हर क्षण उपलब्ध है। दूसरा व्याख्या जो हम करते हैं, लंबे समय तक धर्म की जो शिक्षा है वो बदलती नहीं है। तो अपने अनुभव को याद कर सकते हैं किस प्रकार से हम कहते हैं सांदृष्टिक है, अकालिक है। अपने अपने अनुभव से हम उसको रिकॉल कर सकते हैं ताकि बात सुनी सुनाई बात न रहे, अपने अनुभव की बात हो जाए। साक्षातो भगवता धम्मो, संदिट्ठिको, अकालिको, एहिपस्सिको, हमको अपनी ओर खींचता है, बुलाता है। आओ देखो, धर्म का स्वाद चखो। तो हम भी अपने अनुभव पे आधार पे देखें क्या सचमुच में ऐसा है। हमको बुलाता है, आकर्षित करता है, कहता है कि आओ जांचो, देखो, इन्वेस्टिगेट करो। आजकल हम सतीपट्ठान सूत्र समझने का प्रयास कर रहे थे, देखते हैं निरंतरता से हमको सिर्फ देखने को कहा जाता है। और देखो, अभी प्रवचन सुना भगवान अजान चा का, उन्होंने भी कहा कि जो कुछ भी मन में उठ रहा है उसको देखो, बस उसको अपना न मानो, उसके अनित्य बोध को समझो, अनित्य स्वरूप को समझो।
पस्सिको ओपनैको हमको भीतर की ओर ले आता है, अंदर की ओर ले आता है। संसार बाहर से हम पे इम्पिंज करता है और हम अंदर जाके देखते हैं उसका क्या असर हो रहा है। ये हमें धर्म सिखाता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन कि हमको आगे की ओर ले जाता है। दान से अभ्यास शुरू करते हैं, शील करते हैं, शील का पालन करके समाधि का अभ्यास करते हैं, फिर प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं और लोकीय प्रज्ञा, फिर लोकोत्तर प्रज्ञा। इस प्रकार उत्तरोत्तर हमको आगे की ओर ले जाता है। तो अपने अनुभव से वेरीफाई करें क्या सचमुच में ऐसा है। क्या पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल से हम साधना कर रहे हैं, क्या सचमुच में हम ऐसे हो रहा है? तो हो रहा है तो सचमुच में फिर धर्म के प्रति श्रद्धा जागेगी। हमेशा इवैल्यूएशन में लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहिए। एक एक दिन के आधार पे इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, वर्षों के आधार पे देखना चाहिए कि हमारी साधना हमको सचमुच में आगे ले जा रही है कि नहीं ले जा रही। ओपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योहि। तो हर समझदार आदमी द्वारा अपने भीतर इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया जाता है। तो हमने भी जितना अभ्यास किया है, समझा है इस बात को, तो इस बात को भी जांच के देख लें। जब खूब जांच परख के देख लिया कि हर बात, हर गुण जो हम डिस्क्राइब करते हैं धर्म वंदना में, सब चीज सुराने सच, तो धर्म के प्रति श्रद्धा जागती है और श्रद्धा के बल पे कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास जागता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा हित ही होगा, हम आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। तो एक बार फिर धर्म वंदना के याद करके समापन करते हैं। साक्षातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहिपस्सिको औपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योहीते। तो हम जो चैंटिंग करते हैं मॉर्निंग इवनिंग, उसमें आती है बातें और एडिशनल बातें। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। धम्मा को लोक पतना तद धारी धारी। नीचे लोकों में गिरने से हमें रोकता है। तो इस प्रकार धर्म वंदना को अपनी मॉर्निंग चैंटिंग, इवनिंग चैंटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समझ के सचमुच में भली भांति हम धम्मानुपස්සना कर सकते हैं। उससे चित्त में मोद जागता है, कॉन्फिडेंस जागता है, श्रद्धा जागती है, जो धर्म के मार्ग पर चलने में और इस संसार के दुखों को सहन करने में, ठीक से देखने में बहुत मदद करते हैं हमारी। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन
सदा सुखी भवन्तु मे भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि